यस बेटा बोलिए। जी सावे बोलिए। ओरल कैविटी का रोल बता दो। हाँ जी, किसका रोल? मैम ओरल कैविटी। बेटा आपकी वॉइस नहीं आई क्लियर। मैम ओरल कैविटी का रोल। Oral cavity is mouth. The things when we take the things through the mouth, that is called oral cavity. ठीक है? ओके मैम। चलो। Coming to the next is respiration in other organisms. अब हम बात करते हैं बाकी जो organisms हैं, lower organisms जो हैं, उनके केस में वो कैसे रेस्पायर करते हैं. Okay? So all of you know about the other animals like insects हो गए, birds हो गए. Okay, fish, frog, earthworm है. So we will be discussing about the respiration in those. So firstly, if we talk about the respiration in insects, so how insects they respire, beta? How insects they respire? Yes, Karthik. Yes, ma'am. Ma'am, they have a respiratory system with a network of thin tubes called trachea that are spread in the whole body of insects. Just a minute, beta. They are thin tubes. We call them as trachea. Okay, and they are having small openings on their body. उनकी बॉडी में क्या होती है? स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्पाइरकल्स. Spiracles. We call them as spiracles. Okay, so in spiracles के थ्रू जो है वो एयर एंटर करती है. Okay, it move to these thin tubes, the tracheal tubes. ठीक है, जैसे हमारे bronchioles हैं वैसे ही इनके जो thin tubes हैं they are trachea. Okay, so trachea से ये further जो है वो सारे body parts में जाती है जहां पर ये respire करती है. And the product of respiration is carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide it again moves through the tracheal tubes and it moves out through the spiracles. Okay, तो spiracles के through ये फिर से क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है. Right? तो डायग्राम देख लेते हैं बेटा इसका. Excuse me, ma'am. हाँ जी. मैम इसमें हम ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं. Spiracles are present on the both sides of their body. हाँ जी बेटा, दोनों साइड्स पे हैं स्पाइरकल्स. Okay? So this is the normal structure of an insect. Okay, these are the small openings. These are the small openings that I have made on this. So इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं spiracles. Okay, and each spiracle is further linked to ये जो opening बनाई है मैंने, ये opening जो है that is further attached to the tracheal tubes. Okay, so in this way we can show the other tubes. तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर that is actually the tracheal tube. Okay, so these are the tracheal tubes, these are the spiracles. So air enter होती है through the spiracles that are actually present on the both sides of their body. Okay, and then they move through the tracheal tubes. Tube like structure है जिसके कारण वो सारे body part में जो oxygenated rich blood है, okay, that flows, oxygen rich air that flows through the all body parts. Okay, and the carbon dioxide rich air after respiration जो carbon dioxide rich air है that is also bring back through these tracheal tubes. तो इन्हीं ट्रैकियल ट्यूब से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो वापस आती है एंड इट मूव्स आउट थ्रू दी स्पाइरकल्स, और स्पाइरकल्स के थ्रू क्या है? बाहर निकल जाती है. सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन इन द इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स जो हैं वो ऐसे रेस्पायर करते हैं. व्हाट अबाउट द रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग? यस गौरीश.
Ma'am, earthworms and frogs respire through their moist skin. These skin helps them in breathing in water, and frogs are having lungs also that helps them in breathing on land. Firstly, if we talk about the earthworm, they are having what type of skin? Moist skin. Moist slimy, and slimy skin. slimy skin. Thin, moist and slimy skin होती है. So they respire with the help of this moist skin. Okay? वो अपनी moist skin की help से क्या करते हैं? Respire करते हैं. Clear? And coming to the frogs. Frogs, they both are the land and the water animals. Frog जो हैं वो land पे भी रहते हैं और water पर भी रहते हैं. Okay? So when they are present on the lands, they respire like human beings, like we respire through the pair of lungs. Okay? Through the pair of lungs, they respire like we respire. But when they are present in water, they are also having what type of skin? Moist skin. Okay? So they are also having the moist skin. So they respire with the help of their moist skin in the water. Okay? So this is about the respiration in case of earthworm and frog. Coming to the next is respiration in fish. Respiration in fish. Yes, Karthik. Yes, ma'am. Ma'am, they have a special organ for respiration known as gills on both the sides of their head. Water has dissolved O2 in it. Gills are richly supplied with blood vessels. Gills, they are actually supplied with blood vessels. And their main respiratory part here is the gills. Okay, so जो उनके head के both side पे होते हैं, their gills, they are present on both sides of head. Now what happens is, since they are in water, and we know the water, it consists of dissolved oxygen. Water, it contains dissolved oxygen. ठीक है जी? तो ये वाली जो ऑक्सीजन है, that is actually the in the dissolved form that is taken by the fish. जो फिश है जब वो पानी पीती है तो उसमें से जो ऑक्सीजन है that is taken by the gills. वो ऑक्सीजन जो है उस वाटर में से जो गिल्स हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं, since they are supplied with the blood vessels. ठीक है? So this oxygen, it moves into the blood vessels and it moves throughout their body parts. तो उनकी सारे बॉडी पार्ट्स में जाती है जहां पर रेस्पिरेशन होती है. ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस. एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स? द बाय प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज एनर्जी. ठीक है, एनर्जी इनको मिल जाती है इन ऑर्डर टू डू द वर्क. ओके, बट द मैम इसका ये वाला जो पॉइंट आपने अभी बोला है मैम, इसमें हम ये पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं कि O2 is used to respire, which means breakdown of food and release energy. हाँ जी बेटा, you can write down. ठीक है? Okay, ma'am. So carbon dioxide that is produced, it is brought back through these blood capillaries, okay, that are attached to the gills and they are expelled out through their mouths. तो वैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनके माउथ से बाहर चली जाती है, क्योंकि जो उनका वाटर है वो वाटर जो है जो उन्होंने माउथ में लिया हुआ था इनिशियली, दैट वाज हैविंग द ऑक्सीजन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है एंड दे एक्सपेल आउट दिस वाटर. फिर वो अपने माउथ से उस वाटर को क्या कर देते हैं? एक्सपेल आउट कर देते हैं. ओके, सो इन दिस वे द रेस्पिरेशन इन द फिश इट टेक्स प्लेस. नाउ कमिंग टू द व्हेल्स एंड द डॉल्फिन्स. Coming to the whales and the dolphins. Yes, Ipsa? Yes, ma'am. Ma'am, whales and dolphins respire through lungs.
Very good. Blowholes are surrounded by muscles on both sides. Okay. So they are having blowholes. So they are having blowholes, right? And they are having the pair of lungs also. So when they are present, they have blowhole on the head. When they move to the so when they come out of the water, they will breathe naturally like we do due to the pair of the lungs. Okay. So they are having blowholes that are surrounded on the both sides of their body. Okay. That remain closed when they are underwater. जब वो पानी में होती हैं तो उनके जो blowholes हैं वो बंद रहते हैं. Okay. So blowholes they get closed underwater. Right? So when they come on the surface of the water, they respire. Respire करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं थ्रू दीज बोथ blowholes. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड थ्रू these blowholes. इसीलिए आप देखते हो कई बारी जो whales and dolphins हैं, they eject a fountain of water. तो ऐसे एक blowhole में से पानी आता होता है एक फाउंटेन की तरह. कैन यू सी? ठीक है. तो उस पानी में क्या होता है? दैट कंटेन्स एक्चुअली द कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसीलिए वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर है उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं थ्रू देयर ब्लो होल्स एंड दे रेस्पायर नेचुरली लाइक वी रेस्पायर थ्रू द पेयर ऑफ द लंग्स. ओके. क्या ओके ठीक है. क्लियर बेटा? Right. So coming to the last organisms now, how the plants they breathe. Plants के कौन-कौन से breathing parts हैं बेटा? So every part of the plant they breathe separately. Either if we talk about the roots, stems, and the leaves. Okay. So each and every part of the plant there is respire separately. If we talk about the leaves, so leaves आपको पता है they exchange the gases with the help of stomata, right? The exchange of gases it takes place इसको क्या होगा? मीटिंग कहाँ है? Okay. So in case of plants, the plants they respire with the help of the leaves, roots and stems also. ठीक है. Leaves में stomatal exchange होता है for the carbon dioxide and the oxygen. Okay. And similarly for the roots they are having root hairs through which the exchange of gases it takes place. Okay. So rest we will continue tomorrow.